तो बच्चों, तुम्हारे सीबीएसई के पेपर में एक ऐसा पैराग्राफ आता है जो पैराग्राफ भी है और डिटेक्टिव रिपोर्ट भी है, और इसका नाम है एनालिटिकल पैराग्राफ। इसमें तुमको डेटा दिया होता है और तुमको बनना होता है सीआईडी का एसीपी प्रद्युमन। दया, डेटा का एनालिसिस करो। और बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत इजी है, तो पूरा वीडियो देखो। चलो शुरू करते हैं। क्या होता है एनालिटिकल पैराग्राफ? सिंपल लैंग्वेज में समझो। एनालिटिकल पैराग्राफ का मतलब होता है ग्राफ, चार्ट, टेबल, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ में जो डेटा दिया है उसको समझ के कंपेयर करके तुमको पैराग्राफ में लिखना है। मतलब, डेटा को रिपीट नहीं करना, बल्कि समझ के लिखना है। ट्रेंड्स बताना, इंक्रीज डिक्रीज एक्सप्लेन करना। और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। अब इसके टाइप्स की बात करें तो तुम्हारे सीबीएसई में मेनली 4 टाइप्स का एनालिटिकल पैराग्राफ आता है। पहला है बार ग्राफ, दूसरा है लाइन ग्राफ, तीसरा है पाई चार्ट और चौथा है टेबल। इनमें से किसी एक फॉर्म का क्वेश्चन आएगा और ये जरूर करना। सबके एग्जाम्पल्स देखने ही वाले हैं हम वीडियो में। भाई, एग्जाम्पल और एग्जाम से याद आया, एग्जाम के बाद तुम लोग चिल मारने जाते ही होंगे कुछ खाने और तुम्हारे गर्लफ्रेंड को घुमाने। फिर उसका बिल भरने तुम वॉलेट निकालते हो जो एकदम 3 साल पुराना रेशन कार्ड लगता है, या तो डायरेक्ट पैंट के पॉकेट से खराब नोट निकालते हो। इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं मेसन ऑर्वेने का ये ब्रांड न्यू वॉलेट। ये एकदम क्लीन, प्रीमियम और कॉम्पैक्ट है। कार्ड्स और कैश दोनों इजीली फिट और पॉकेट में बिल्कुल बल्कि नहीं लगता है। मतलब बिल भी भरोगे और ऑरा भी रहेगा। ये सोने पे सुहागा है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके कर दो ऑर्डर। अब सबसे जरूरी बात की इसे लिखना किस तरह है, मतलब फॉर्मेट कैसा है। तो सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन। डेटा किस टॉपिक पर है, किस ईयर, कैटेगरी का है और अपने मन से थोड़ा सा स्टार्टिंग आपने ऐड करना है। दूसरा आएगा बॉडी, मतलब मेन एनालिसिस। इसमें हाईएस्ट लोएस्ट, इंक्रीज डिक्रीज, कंपैरिजन, मेजर ट्रेंड्स, अप्रॉक्स फिगर्स। सो बात की एक बात बोलूं तो मेन कंटेंट आएगा। और लास्ट में होगा हमारा कंक्लूजन, मतलब ओवरऑल समरी, और तुम्हारे कुछ व्यूज लिख सकते हो। दैट्स इट। अब एग्जाम्पल्स देखने का टाइम आ गया है। पहला क्वेश्चन टाइप है बार ग्राफ बेस्ड। तो चलो ये सैंपल क्वेश्चन देखो। A bar graph shows the marks scored by 4 students in English. Student A 70, student B 85, student C 60, students D 90. Study the bar graph and write an analytical paragraph in 100 to 120 words describing the reading trends. अब जो मैंने बोला था फर्स्ट इंट्रोडक्शन, तो उसके अंदर ये चीजें आनी चाहिए जिसमें डेटा किस चीज का है, किस फॉर्मेट में है, जैसे कि ये बार ग्राफ है, और किस सब्जेक्ट या टॉपिक का है। The bar graph provides information about the English marks scored by 4 students, namely A, B, C and D in English. दूसरा मैंने बोला था एक्सप्लेनेशन या ओवरव्यू। इसमें हम ओवरऑल ट्रेंड बताते हैं, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट मेंशन करते हैं। Overall, it is clearly seen that student D scored the highest marks, while student C scored the lowest. Student B also performed well and remained close to the top scorer. तीसरा मैंने बोला था एविडेंस, एग्जाम्पल्स। इसमें तुम एग्जैक्ट नंबर बोल के प्रूफ दोगे। Student D scored 90 marks, which is the maximum among all 4 students. Student B secured 85 marks, showing strong performance. Student A scored 70 marks, which can be considered average. On the other hand, student C scored only 60 marks, making it the weakest performance. The difference between the highest and lowest marks is 30, showing a noticeable gap. चौथा बोला था एनालिसिस। अगर ये 1-2 लाइन ऐड करोगे तो पैराग्राफ टॉपर लेवल बनेगा। This data suggests that students D and B have better understanding and preparation in English. Student A seems to be at an average level and can improve with regular practice. Student C may need extra attention in areas like grammar, writing and reading comprehension to match the others. और लास्ट है कंक्लूजन।
इसको बताने की जरूरत नहीं, तुम तो शाने हो, बस मन से लिख दो। In conclusion, student D is the top performer followed by B, while student C needs improvement. Overall, the bar graph shows varied performance levels among the students. और ये बार ग्राफ फिनिश। अब बारी है लाइन ग्राफ टाइप क्वेश्चन की। तो ये रहा क्वेश्चन। Below is a graph given showing birth and death rates in a country from 1901 to 2101. Write an analytical paragraph 100 to 150 words. चलो अब इसकी ऐसी तैसी करते हैं। इंट्रोडक्शन में ऐसे आएगा। The given line graph shows the birth and death rates in a country from 1901 to 2101. Explanation overview में ये आएगा। Overall, the birth rate rises sharply in the middle years and then gradually declines, whereas the death rate shows a steady increase and later overtakes the birth rate. अब evidence या examples में ये आएगा। In 1901, the birth rate is around 20,000, while the death rate is nearly 8,000. The birth rate increases sharply and reaches its peak of about 65,000 around the 1960s. After that, it shows fluctuations and gradually declines to nearly 50,000 by 2001 and further to about 43,000 by 2101. On the other hand, the death rate rises steadily from about 8,000 in 1901 to nearly 27,000 by 2001. After 2001, it increases rapidly and crosses the birth rate around 2041, reaching about 58,000 by 2061 and remaining above 55,000 till 2101. अब analysis में ये। This trend may indicate that the population initially expanded due to high birth rates. However, in later years, birth rates declined possibly due to better education, family planning, and changing lifestyles. The rise in death rate after 2001 may suggest an aging population over time. और conclusion में ये। In conclusion, the graph shows that while births dominate for most of the period, deaths surpass births after 2041, suggesting a possible decline in population in the long run. और इसी के साथ इसकी भी बजा दी हमने। अब अगला है पाई चार्ट। ये पिज़्ज़ा जैसे दिखता है। तो सुनो क्वेश्चन। You asked people what they thought was the most valuable thing. The given pie chart shows the analytics of the different answers you received. Write an analytical paragraph for a research project in 150 to 200 words. रेडी हो जाओ मेरे शानो। इंट्रो में लिखो। The given pie chart presents the responses of people about what they consider the most valuable thing in life. Explanation में सबसे ज्यादा knowledge, सबसे कम power, love or money mid-range. Overall, knowledge emerges as the most valued option, while power is considered the least valuable. Love and money also receive significant responses. उसके बाद evidence, examples में Nearly 48% of people chose knowledge as the most valuable thing. Love was selected by 20% of respondents. Money stood close behind with 18%. Fame received 8% responses, whereas power was chosen by only 6%, making it the least preferred option. उसके बाद analysis में knowledge का long-term benefit, Love emotional support. money important but not everything वगैरह. This data suggests that people value long-term growth and wisdom more than material success. Knowledge is seen as something that helps in every stage of life. Love is also considered important as it provides emotional support and happiness. Although money is necessary for comfort and security, fewer people consider it the most valuable. Fame and power remain the least preferred as they are often temporary and uncertain. और conclusion में In conclusion, the pie chart highlights that most people consider knowledge as the greatest wealth, while power and fame are valued the least. इसी के साथ पाई चार्ट को भी पिज़्ज़ा जैसे खा लिया। अब आखिरी बचा है टेबल टाइप क्वेश्चन। इसकी भी ऐसी तैसी करते हैं अब। Teenagers have different tastes in spending their free time. The following data shows how teenagers spend their free time. Write an analytical paragraph in about 120 words analyzing how boys and girls spend their free time. अब अपना हर बार जैसे पहले इंट्रो में आएगा। The given table shows how teenage boys and girls spend their free time through different hobbies. उसके बाद explanation,
Overall, boys spend most of their free time playing games, while girls prefer watching movies and songs. The table also shows clear differences in reading habits and interest in sports. उसके बाद evidence, examples. Playing outdoor and indoor games is the most preferred activity among boys, with 40%. In comparison, only 20% girls choose games. Girls show a strong interest in watching movies and songs with 35%, whereas boys have only 15% in this category. Reading books and comics is chosen by 25% girls, which is much higher than boys at 12%. Talking to friends accounts for 20% girls and 10% boys. Watching sports is preferred by 16% boys, while only 4% girls choose it. उसके बाद analysis. This data suggests that boys are more inclined towards physical and outdoor activities, such as sports and games. On the other hand, girls appear to spend more time on entertainment and reading-related hobbies. The difference may be due to personal interests and social preferences. उसके बाद और आखिरी conclusion. In conclusion, boys mainly prefer games and sports, while girls spend more time watching movies, reading and talking to friends, showing varied choices in leisure activities. और इसी के साथ सारे क्वेश्चन खत्म कर दिए। तो चलो यार, मुझे भी कब से भूख लगी है, मैं जाता हूं अब लंच करने। तुम लोग पढ़ते रहो, वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करो। Bye bye.